क्या उस दिन हुआ था जब आप गए थे उनके साथ में? ये हमें घटना पता है कि वो वीडियो के लिए बात करने गए थे। कौन कौन आप लोग गए थे? स्टेप बाय स्टेप क्या एग्जैक्टली हुआ था? क्या उनसे बातचीत हुई थी? और ये क्यों इतनी घटना हो गई कि उनको मार मार के मतलब उनको जान से मार दिया है? मैम, जो हमारी लड़की की वीडियो वायरल की उसने, तो हम उसे ऐसे थपका देने गए कि हमारी लड़की की वीडियो वायरल किया तो आपका लड़के को हमको हाजिर कर दो। तो हमके पूछ के फिर उसको समाधान करने के लिए ऐसे बात करने के लिए गए थे वहाँ पे। तो उन लोगों ने पहले दिन गए, फिर भी लड़का भाग गया था। दूसरे दिन गया, फिर भी लड़का भाग गया था। तो इस 24 तारीख को शनिवार को हम रात को गए, तो हमको तो मालूम नहीं था कि इन लोगों का ये प्लान बना के रखा हुआ है। 7 आदमी वहाँ पे ऐसे आग जला के बैठे रहे थे। तो हम उसके साथ बात करते वापस मोड़ने वाले थे न, उससे पीछे से वार कर दिया। तो पहले मेरे आदमी को गिरा दिया, मार दिया, उसने जान से मार दिया। लाठी पावड़े का साथ वो सब कुछ ऐसे लेके फटाफट उसने एक की जगह पर पीट दिया, तो उसको मर गया वहाँ पे। और लड़के को ये भी ऐसे सिर में ही मारा, तो सिर को लड़के को भी भर नहीं रहा। फिर मेरे को पैर में मारा, हाथ में मारा और सारा पीठ पर। आपको भी मारा? आपको भी स्पेसिफिकली टारगेट करके भी मारा गया? हाँ, मेरे भी मारा गया। मेरे को हाथ में भी मारा और ये पैर में भी और कमर में भी मारा। तो अभी मेरे से चलाई भी तो नहीं जाता। ये सब मेरा पकड़ के चलाते हैं। आपको हाथ में भी लगी है? कहाँ, क्या क्या मतलब आपको किस तरह से मारा गया था? क्योंकि आप बता रहे हैं क्योंकि वहाँ पे डंडा, लाठी, छुरी वगैरह लेके लोग। लाठी से मारा मेरे को, लाठी से। और मेरा हस्बैंड को धरियाल और लाठी और पावड़े का हाथा आता, वो उससे पीटा गया। पर क्यों ये हुआ? क्या लोग थे? कितने लोग थे? क्योंकि अगर आप बता रही हैं कि 25 से 20 लोग थे वहां पर मौजूद थे और ये सारे जो छुरी कांटे वगैरह जो हैं, सारे जो वेपन्स हैं वो उनके साथ में थे, तो ये आप भी बता रही हैं कि कुछ साजिश जैसी थी। किस वजह से आप बोल रही हैं? हमें ऐसे वजह से बोल रहे हैं कि हमारी लड़की को वीडियो क्यों वायरल किया, वो इसको ऐसे मनाने के लिए और इसको बात बताने के लिए गए थे और कुछ नहीं था। तो उसने से जब हम वो बात करके वापस चलने वाले थे, तो उसने एक लड़का उठ के रोड पे गया और उठ के आया और सभी 25-30 आदमी ऐसे निकल के आए और पीछे से वार कर दिया उसने। So you heard the wife there speaking to our colleague Priyanka, who's reporting from the spot. Where does the investigation today stand? So let's break more details of this second FIR now that has been registered by the cops, and this is against a man called Shailesh. Now, who really is this man? This man, allegedly here the police says, is the man who made this video and who ensured that this video goes viral. The reason why this second FIR also now has been filed. We also have a reaction now coming in from the top cop on the investigation so far. Let's quickly listen into that, and then we'll take you across to Priyanka reporting live on the story. We are Bajpai, Deputy Superintendent of Police, Nadia Division. चकलासी के पुलिस थाने के वनीपुरा गांव में तारीख 24 की रात को 10 बजे के आसपास मेलाजी डाया भाई वाघेला करके जो शख्स है, वो अपनी पत्नी मंजुला बहन, अपने लड़के नवदीप, हनुमंता और भतीजे चिराग के साथ शैलेश यादव करके एक जो युवान है उसके घर पर गए थे। शैलेश यादव ने जो कंप्लेनेंट है मंजुला बहन, उनकी जो सगीर भाई की जो बेटी है, उसका एक वीडियो वायरल किया था। उसी सिलसिले में वो लोग उसके साथ कुछ बातचीत करने के लिए गए थे। लेकिन तभी जो शैलेश के पिताजी हैं दिनेश भाई और उसके चाचा अरविंद भाई और दिनेश के पिताजी छबा भाई और उनका अरविंद भाई का लड़का सचिन, साथ में भावेश और अरविंद भाई की पत्नी कैलाश बहन और शांता बहन, तो सब वहाँ पर ताप रहे थे। और उसी दौरान ये लोग वहाँ बातचीत करने के लिए पहुँचे। तब ये लोग ने यकायक ये जो मंजुला बहन है, उनके पति मेलाजी जो बीएसएफ में सर्विस करते हैं, उन पर हमला कर दिया। और
So you heard the police, they're telling us more about the particular sections and the charges against those who are accused. We also remember see images of all the accused there on our screens. Also Priyanka joining us live. She has been investigating this case deeply for us. Priyanka, what is it that you've understood so far about the case? Now, is this case about the fact that this Jawan goes to the family here, the family there then, has an argument? This is about that objectionable video of this little girl who's all of 15. Is this all about the story, or there is more to it as the family alleges? And why do they believe that there is a larger conspiracy behind the murder? Well, that essentially is the allegations that are now being made from the family members of the late BSF Jawan, because now we're being told that the family members in fact have stated that there were 20 to 25 people as well that had been there. The police is of course looking into the matter, but let's show our viewers what exactly happened on that night as far as we have understood it from our police sources and from the statement of the family members of the BSF Jawan as well, that is Melji Bhai Waghela. So now this is the place of the accused, Deepti. This is the house of the accused specifically Shailesh, who was being sought for from Melji Bhai when he had come here. Now what we are also showing you is the place where all of them had been sitting on the night in question, where when Melji Bhai had come here, there were 7 of the accused that have already been taken into custody. They had been seated here and they had been talking to Melji Bhai as well. And then from behind, from the farming areas, from the farmlands, what we see behind this particular area is from where the family members allege that there were at least 20 people who came and then surrounded Melji Bhai and then of course beat him to death brutally, is something now is being said by the family members, and the police of course has said that they will be investigating into that matter. But they have also said that there was a targeted attack on Melji Bhai for sure, is something that is being confirmed from our sources. And apart from that, now we also see how this particular accused, that is Shailesh, had also made this kind of a video and then of course had also targeted this particular family. And we had seen how Melji Bhai had then gone to the family members, this particular place where we are, and he was brutally beaten to death. Not just that, Deepti, we had heard these kind of horrific statements from the widow of the BSF Jawan, that is Melji Bhai Waghela as well, Vasundhara Waghela in fact, who told us she threw herself on the body of Melji Bhai Waghela to stop the people from beating him up as well. Now this is the spot where that entire incident had taken place, and that is where the entire investigation in fact is also being taking place to understand what really had gone on and whether or not there is a bigger conspiracy to this entire attack on Melji Bhai, because as you rightly pointed out, Deepti, what really was his fault? He was not even here as a Jawan. He was coming here as a father to avenge his daughter, to ask, in fact, just to confront, verbally confront the accused, that is Shailesh, and to which he was met with this kind of a brutal attack, this kind of a targeted attack from the family members of the accused as well, who now, in fact, the Melji Bhai's Waghela's family members now claim that there were at least 20 to 25 people as of now, Deepti, the accused that have been taken into custody and have been sent into the judicial custody as well are 7 people who had been seated here right behind me at that spot where Melji Bhai had come and he was confronted and then beaten to death. But then of course now we also see another second FIR against Shailesh, who had been absconding, who is still absconding. Another FIR under the POCSO Act as well against Shailesh for making that video. So 2 separate cases that we're looking at. But of course, looking at the larger investigation of this targeted attack against Melji Bhai Waghela, who was a BSF Jawan, who was brutally hacked to death by weaponized farm tools that had been brought by certain people that had then attacked and hacked Melji Bhai Waghela to death. Deepti. So, Priyanka, this entire story is disturbing at multiple levels. The very fact that you have a soldier who's treated like this, and his only fault is, Priyanka, that he went to the family and actually told them that, listen, I mean, this kind of a conduct is not done. Please pull down this video of my daughter. And he's literally hacked. And I was also reading, and you also told us of the kind of weapons, Priyanka, that have been used. They used axes. Now, from where was all this weapon procured? Was this always available with this family? And also,
What does the police say about the main accused here, Shailesh, who's still said to be absconding? Where is he? All right, I didn't hear the last part of your question, Deepthi. We are in a very remote area right now. But from what I could tell, as far as the kind of investigation is also concerned in this entire matter, when we look at Melji Bhai Waghela, as you very rightly pointed out, that what really was his fault? He had come here as a father to ask questions to the accused. In fact, the family members of Melji Bhai Waghela now tell us that the fault that they made was that they did not go with enough backup, and they did not go with the youngest and the eldest son as well of Melji Bhai Waghela, because they said that they did not come here with the intention of them getting into a physical altercation. Even then, we see that Melji Bhai Waghela had come with his wife and his son as well. But now we're being told that there were 20 to 25 people is something that is being alleged by the family members. So they essentially are saying that there was a premeditated conspiracy to carry out this kind of an attack. So essentially what they also say is that prior to the attack, 2 days prior to the attack, both the days, Melji Bhai Waghela in fact had gone to the accused house, this particular house where we are, and had tried to confront them and had tried to ask them about Shailesh. Now 2 days he did not find Shailesh, and the third day this kind of an incident has taken place. So that essentially tells us what the kind of allegations are of the family members of Melji Bhai Waghela, where they now say they say that they have reason to believe that the first and the second days they did not have anybody, but the third day they came prepared, and there were 20 people who had been there, who came with weaponized farm tools as well, because these were not essentially just weapons, these were tools that were used as weapons to hack Melji Bhai Waghela. So all of these things have been said to the police officials in their statements by family members of Melji Bhai Waghela, by his son, by his widow as well, and they have also made these kind of statements to the police officers, making sure that their suspicions about the kind of conspiracy that was being carried out, which has also been said by the family members when we had that conversation with them, and they are saying that they want a CBI inquiry, a CBI investigation into this entire matter, so that there can be justice for Melji Bhai Waghela, the BSF Jawan who had just come as a father to avenge his daughter, to just ask the questions to the accused to understand why he was circulating these kind of videos, and also to ask him to stop circulating these kind of videos as well. So now we see that at least 2 FIRs have been registered into this matter, and further investigation is underway, Deepthi, as we speak. But of course the family members still demanding that there has to be a CBI inquiry, there has to be a further inquiry into the entire line of questioning as far as the 20 to 25 people that is being alleged by the family members of Melji Bhai Waghela who had been present here. They also need to be brought in, is something that the family is now demanding. Deepthi. It's a shocking and a disturbing story, to say the least, Priyanka. If this is how, a father is treated, he happens to be a BSF Jawan, he's attacked, he's lynched only because he was asking for his daughter's honor. The story is unfolding. The main accused, remember viewers, is still out of the radar of the cops. More details on that story will also be available on republicworld.com. Please let us know what you think about this entire story that we've got to you here. It's a Republic investigation. We are heading into a quick break, but when we come back, there is another story that is holding the nation's attention this evening. What really happened with Tunisha? Did she commit suicide, or was this a foul play? These are images of the distraught family as they've bid the final goodbye to Tunisha, even as more co-actors are being quizzed in the entire case. Powered by ArcelorMittal, Nippon Steel India Limited. Smarter steels, brighter futures. छक्का नहीं, टूटा। आपके टाइल्स को चाहिए MYK लेटिक्रीट टाइल एडेसिव। फॉर्मूला ऐसा कि अब टाइल न टूटेगा न छूटेगा। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी, तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। Guys, just 1 second. Choosing a car for my mom. What? Online car shopping? Wow, that's so cool, yeah. शाहरुख ने बताया. Wait up. Booking a car service. From here. क्यों? तुझे शाहरुख ने नहीं बताया? इसने पूछा ही नहीं. There's so much more जो शाहरुख ने नहीं बताया. It's all on the industry first My Hyundai app. Open a world of possibility with My Hyundai app. One app, many worlds. India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amrit Kaal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharatiya Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. Yeah, Ajay, look at your dad. Will we be the same at his age? Absolutely yes, if we plan our future like him. How? My father had invested in LIC's Jeevan Akshay, which gives immediate and guaranteed annuity at regular intervals, that too for life. Wow. But do we have to wait until his age? Absolutely not. We recently invested in LIC's new Jeevan Shanti, which gives deferred annuity, which means regular income after some years. I see. LIC. LIC's annuity plans give 10 annuity options and flexibility in receiving regular income. LIC, हर पल आपके साथ. Mixer grinder has come to this DTDC career office at KR Puram in Hassan, and then it was delivered to a person. This person has returned the mixer bag stating that this has not come from the right address. The victim Shashi has switched on the mixer, at which point of time it has exploded. Veteran Congress leader Salman Khurshid, in which he has likened Prabhu Ram with Rahul Gandhi. Pakistan boat with 10 crew members carrying arms, ammunition and 40 kgs of narcotics worth 300 crore rupees has been intercepted off the Gujarat coast jointly by the Coast Guards. A family that is still coming to terms with their daughter's death. Tunisha has been cremated this afternoon, but the focus is now on the investigation to find out if Shizan is really responsible for Tunisha taking such a drastic step to end her life. We'll get you all the details in this case. As I say good evening, I'm Suesha Samant. We begin with the headlines, after which we cut across to the updates coming in. हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है, तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं. Congress crosses heights of sycophancy, equates Rahul Gandhi to Lord Ram. ये सब तुलना अगर कहीं इस्तेमाल हुआ है तो मुझे बता दो. भगवान से तुलना ना हो सकती है ना मैं कर सकता हूं. Congress defends Lord Ram comment, says won't toe Nagpur line. Now for them to compare Rahul Gandhi, son of a Catholic mother and a Parsi father, to Bhagwan Ram is opportunist, is hurting sentiments of Hindus. BJP lashes out at Congress, says the party is insulting Hindus with comparison. Police record statements of Tunisha's co-actors as death probe deepens. BSF Jawan lynched in Anand for trying to protect his daughter's dignity.
Russian lawmaker and his aide found dead in Odisha hotel in a span of 2 days. Yes, Republic has been able to access crucial CCTV footage from the hospital where Tunisha was taken just after the alleged suicide. CCTV footage that shows Shizan who had taken Tunisha to hospital. Tunisha's co-star Shizan is currently in police custody. He will be in custody till the 28th of December. The police is interrogating the actor and trying to find out what happened between the two that led to the actress ending her life. Tunisha was cremated at the Godev Shamshan Bhumi in Bhayandar East in Mumbai. Sandeep is joining us live with more details of the investigation that is continuing, where the focus is now to get details of what role Shizan played in all this. Remember, Tunisha's family has been claiming that Shizan tortured her, he misled her, he was never serious about her, he made false promises, he was actually dating other girls while he was in a relationship with Tunisha. But this afternoon we also saw at the cremation ground where Shizan's family was present for Tunisha's cremation. Shizan along with 2 crew members had taken Tunisha to the hospital after she had allegedly died. She hung herself in the makeup room, committed suicide, and cutting across to Sandeep, who's with us on the broadcast. Sandeep, those pictures from the hospital, CCTV footage that puts out how Shizan along with 2 crew members had taken Tunisha to the hospital, which means there is a high possibility that he was also among the first few people who had discovered Tunisha and the state she was in after she allegedly took her life. See, yes, Suesha, as you rightly mentioned, he was one of the first few people who in fact discovered after, Tunisha, Tunisha hung herself. And in fact, when Tunisha was in fact not responding, there was chaos on the set wherein people were looking out for Tunisha. But no one was in fact able to connect to Tunisha at that point of time. And in fact, at the same time, after the chaos, people started looking out for Tunisha, and it was later realized that she was in the makeup room and having lunch with, in fact, earlier with Shizan. But as Shizan returned back from the makeup room and Tunisha was not, in fact, didn't came back. So for the same reason, people started looking out for her, and later on the room was in fact locked from inside, and later on the door was broken, and then it was found that Tunisha had committed suicide. Now between this suicide time, it is a very mysterious time wherein Shizan and Tunisha had in fact had a lunch together at 3 p.m. and in fact after 15 minutes, it is being said by police that after 15 minutes she hung herself on the pull-up bar, which was also there in the makeup room, and in fact she has tied the bandage, hand bandage on her neck, and she hung herself. So these are the part of the investigation, and that would be investigated. Remember, at this point of time, the body ornaments, her dresses, and the blood stains on the body. Remember, if you could go through with the visuals there on the screen, you can see one person from the set is carrying her, and is also assisted with one lady as well as Shizan Khan, and they are carrying her to the hospital, to the nearby hospital, and Shizan is very much seen in the CCTV footage that we have in fact access. Now after which police was informed as she was admitted, police was informed, police came, Panchnama happened, and in fact her body was in fact taken for postmortem.
The post-mortem report mentions that she died due to strangulating, and in fact there was no marks on her body. That is mentioned in the body. Her viscera report is also being preserved. So tomorrow is a crucial day, as Shizan's custody is going to end tomorrow. So it will be crucial to see how police, what kind of evidences will be produced in the court. But this would be one of the important evidence that would be in fact produced in the courthouse. Absolutely, Sandeep, and we'll keep coming back to you for further updates as the investigation continues. For the moment, thank you for joining us. And well, the Maharashtra Legislative Council unanimously passed a resolution to legally pursue inclusion of 865 Marathi-speaking villages in Karnataka into the western state, and that the centre should ask the southern state to guarantee the safety of Marathi people living in the border areas. Getting you all the details in this report. Maharashtra-Karnataka battle has further intensified, as Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde condemned the anti-Marathi stand of Karnataka, and the Assembly unanimously passed a resolution on the border dispute. The move comes days after the Karnataka Legislative Assembly unanimously passed a resolution on the border row with Maharashtra, resolving to protect the state's interests. And having passed the resolution, Maharashtra Chief Minister alleged betrayal by Karnataka government. 14 डिसेंबर 2022 रोजी माननीय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह साहेबांनी नवी दिल्ली येथे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मी स्वतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी यांच्या समेत बैठकी दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय ठेवून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येऊन वाद न वाढवता शांतता दोन्ही राज्यांमध्ये ठेवण्याकरता एकमत केले असताना देखील विपरीत भूमिका कर्नाटक शासनाने घेणे, दरम्यान कर्नाटक विधिमंडळाने 1 इंच जमीन न देण्याच्या दिनांक 22 डिसेंबर 2022 रोजी केलेल्या ठरावामुळे सीमावादाला चितावणी देण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून जाणीवपूर्वक केले जात असून कर्नाटक शासनाची भूमिका लोकशाही संकेतात धरून नाही. Needless to say, Eknath Shinde's comment triggered another war of words. We have built this Suvarna Sauda only to protect here, to protect their rights, interests, and safeguard their interest. So it is a very shame on the part of Maharashtra government for having moved such type of resolution. We condemn it, we oppose it. Entire Karnataka stand by the people of Karnataka. The Maharashtra resolution stated that there are 865 Marathi-speaking villages and the state stands with the Marathi-speaking villages on the Karnataka border. Whatever will be required for the same in Supreme Court, the Maharashtra government will do so, added the resolution. The resolution also calls for centre to ask the southern state to guarantee the safety of Marathi-speaking people living in the border areas. The conflict between the two states, both ruled by the BJP, is expected to escalate further despite Union Home Minister Amit Shah's intervention as Karnataka goes to polls next year. Bureau Report, Republic TV. And breaking news coming in, Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai has slammed the Maharashtra resolution, calling Maharashtra resolution unconstitutional, saying it is against the federal structure of the country. The matter is settled and doesn't have to be rigged up again and again. We also have a reaction to that effect. Let's listen in, after which we cut across to my colleague Prajwal. Maharashtra resolution is unconstitutional, against the law. It will not hold waters in any forum, including the Supreme Court. Maharashtra resolution is unconstitutional, against the law. It will not hold waters in any forum, including the Supreme Court. Prajwal is with us. Prajwal, well, the Maharashtra Legislative Council said that they will legally pursue this resolution that they've come to, which is the inclusion of 865 Marathi-speaking villages in Karnataka. Obviously, a decision that will completely be opposed by the Karnataka Chief Minister. But how is the battle going to pan out? What's expected? Will this only follow on the legal route?
and the matter will remain peaceful on the border area, or we could see other changes as well? Suesha, first and foremost, now the resolutions have been passed. There has been counter resolutions too, which has been passed. And now there has been a war of words between leaders of both the state, even in Maharashtra as well as in Karnataka. So it is basically happening in a manner where it is they are going on and following a tit for tat method over here, and an eye for an eye too. Because now Karnataka is going on to allege that Maharashtra Chief Minister has given provocative statements today after passing the resolution 2, which should not have been done, and this is unconstitutional. But in the same manner, even if we look at it, Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, the Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis too have also spoken in the same manner and have stated that whatever statements is being given by their counterparts out here in Karnataka too has gone on to be very provocative. Yes, the legal councils of both the state of Maharashtra and Karnataka are battling this out in the Supreme Court, but also now this has also, spilled onto the streets as well, where pro-Kannada organizations on one side, the Maharashtra Ekikarana Samiti and pro-Marathi organizations on the other side are at loggerheads with each other too, and the chief ministers of the respective states are under tremendous pressure from the opposition parties as well, making sure that they do not even concede an inch of land. Meanwhile, Maharashtra has gone on to claim that 865 villages belong to Maharashtra, where Marathi people are there. But also what was very key over here is the fact that no matter what, the leader of the opposition in particular in Karnataka, Siddaramaiah, has clearly gone on to state that no matter what, yes, we respect the Marathi-speaking people, but they are all citizens of Karnataka, and their Kannadigas first is what the Congress is towing the line over here. So we can expect that there will also be a heated discussion in the assembly as well as the council in Karnataka, because the session is underway, and today too we saw a heated exchange of words in the legislative council, mainly BK Hariprasad going on and questioning as to what exactly was the BJP government in Karnataka doing, because despite the assurances as well as the instructions by the Union Home Minister Amit Shah, somewhere there seems like that the Maharashtra government is going on and towing the line and testing the patience of Kannadigas, is what BK Hariprasad stated. But on the other hand, the BJP also went on and stated that no matter what, even we will not concede an inch of land, and in this particular matter all the parties are together as well. So there will be some sort of high-level meetings which will also be chaired by the Chief Minister of Karnataka, Basavaraj Bommai, along with his cabinet colleagues too, and we can expect a lot in this regard. And mainly when it comes to the law and order situation in Karnataka, in the bordering region of Belgavi, largely it has remained peaceful, but the Home Minister Araga Gnanendra too, who went on and spoke to Republic, stated that there will be additional deployment of security forces, but we will make sure that the matter does not reach in such a way, and there will be absolutely no sort of obstruction or any sort of problem when it comes to transportation between the two states or the people going on and ferrying between the two states. Over to you, Suesha. Absolutely, Prajwal. We will see how this pans out, tracking every development very closely. For the moment, thank you for joining us. One question, it's a democratic framework, sir. I want to ask you very sincerely, please, sir. You know something about Congress Party's opinion Sir, about... I understand, sir, but just, I just want to understand one very simple question. No, you sit here, I'll come and explain to you. No, Sir, we were waiting for you for 2 hours, sir. Doesn't matter. Fine. I'm telling you to go and sit there. I'm coming, I'll talk to you, but I will sir, not... Okay, you tell me, what time are you going to be coming and speaking to us? We are going to give you the framework, sir. Please, Now for them to compare Rahul Gandhi, son of a Catholic mother and a Parsi father, to Bhagwan Ram is opportunist, is hurting sentiments of Hindus. It is important to keep your HbA1c in the target range of 6.5 to 7% to avoid complications. With Beto's Diabetes Care program, get online doctor consultation, all your prescribed medicines and a dietitian consultation. Get a free glucometer and expert advice with Beto's Diabetes Care program. Give a missed call on 740-1100. क्या हुआ रोहन? क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए? रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो,
सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। Reimagineering brighter futures with smarter steels. Thank you for staying with Republic. And well, in a shocking incident in Hassan in Karnataka, a mixer grinder that was lying in a DC courier shop exploded and blew up into pieces after the shop owner switched it on. The owner sustained major injuries and is currently in the hospital. Investigation over the cause of the incident is underway. Getting you all the details in this report. A mixer grinder blew up into pieces at a courier shop in Karnataka's Hassan, which injured the owner of the shop grievously, where he sustained injuries to his arm and leg. Hassan SP and an FSL team from Mysuru arrived at the spot and investigated the incident. ಮಿಕ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಮಿಕ್ಸಿ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಯಾರು ಶಶಿ ಅಂತವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥವ್ರು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 3-4 ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಇಂಜುರೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲೆ ಟೆಂಡನ್ ಇಂಜುರಿ ಇದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಜುರಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಜುರಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಮೇಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ. The mixer grinder had arrived 2 days ago at the DTDC courier shop, and the courier boy had delivered to the address mentioned on the parcel. Of Hassan, Mr. Hariram Shankar has also gone on to clearly pointed out that there was no sort of foreign particles which was found as well. So meaning to state that he has ruled out that this is not a blast at all. He's ruled it out completely. The intensity of the blast was such that the window panes, the glass panes inside the office has shattered completely, and this incident happened at 7:30 last night. And therefore a forensic science team of the FSL from Mysuru has arrived in Hassan now, and they are trying to find out as to why did this particular mixer grinder go on to explode. The mixer grinder was however returned yesterday, stating that it had not come from the right address. The owner of the shop switched on the grinder, during which it exploded. As the investigation is underway, cause of the explosion is still not known. Bureau Report, Republic TV. Amity faculty have filed over 1,700 patents. Yet another reason why Amity has been conferred with the National Intellectual Property Award by Government of India for being the top Indian academic institution for patents and commercialization. क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए? रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में।
एनपीएस में? भैया अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। झाके रे झाके झरोके से झाके, देख के दम है छोटे बड़े सारे। झाके रे झाके फ्यूचर को ये ताके, तरक्की को टुक टुक हर कोई ताके। झाके रे झाके। Reimagineering brighter futures with smarter steels. ArcelorMittal, Nippon Steel India. Smarter steels, brighter futures. Thank you for staying with Republican. Well, BJP leader Pragya Thakur's controversial statement, where she's gone on to say that Hindus have the right to respond to those who attack them with sharpened knives. This has triggered a furious reaction from the Congress in Karnataka. Getting you all the details in this report. Bharatiya Janata Party MP Sadhvi Pragya Singh Thakur has sparked controversy with her weapons call. लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं। This comment was made in Shivamoga and was made in context of alleged love jihad cases. Congress has demanded arrest of BJP MP, triggering a political face-off. It remains to be seen if there will be any action against the controversial BJP leader. Bureau Report, Republic TV. एक दिन मैं सोते सोते गिर गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। पता है किसने किया? घोस्ट ने। वो हर बार मुझे बचा लेता है। मिलोगे? अरे कोई घोस्ट नहीं, रोनी के पापा ही हैं जो उसे सेफ रखते हैं। जैसे हैवेल्स लाइफ शील्ड वायर्स जो दिखते नहीं पर घर को सेफ रखते हैं। ना आग पकड़े न जहरीली गैस छोड़े। वायर्स दैट डोंट कैच फायर। Uncontrolled diabetes can lead to long-term complications and damage your heart, eyes, kidney and nerves if remains untreated. With Pito's Diabetes Care program, get online doctor consultation, all your prescribed medicines and a dietitian consultation. Get a free glucometer and expert advice with Pito's Diabetes Care program. Give a missed call on 740-1100. इक्विटी में इन्वेस्ट कर, ग्रोथ का है चांस। डेट में है लो रिस्क, बात मेरी मान। गोल्ड सिर्फ गोल्ड, भैया ने भी यही किया। सुन सबकी कर मल्टी, मतलब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, यानी 3-in-1 फंड। ये इक्विटी, डेट, गोल्ड तीनों में एक साथ इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान पूर्वक पढ़ें। सामने फ्यूल पंप है, वहाँ से ले लें। जी सर। सर फ्यूल तो पिछले पंप में भी मिल जाता, इंडियन ऑयल में ऐसा क्या है? कुछ है स्पेशल, खुद ही देख लेना। स्पेशल? अरे इंडियन ऑयल की तो बात ही कुछ और है। जरा देखें, फ्यूल तो बराबर डाल रहे हैं। अरे यहाँ कंप्लीट ऑटोमेशन है, मतलब प्योर और पूरा दोनों ही। इन सेंट्रली मॉनिटर्ड मशीन्स की एक एक रीडिंग का हिसाब है यहाँ पर। क्या हुआ?
सर बिल। ओह बिल, ओके। वाह सर। क्या था ना, इंडियन ऑयल की बात ही कुछ और है। इंडियन ऑयल, पहले इंडियन फिर ऑयल। सोच रहा हूँ कमेंट्री ट्राई करूँ। मैच का आखिरी बॉल, तेज तूफानी डिलीवरी, एक धमाकेदार शॉट और ये गया छक्का। छक्का नहीं, टूटा। आपके टाइल्स को चाहिए MYK लेटिक्रीट टाइल एडेसिव। फॉर्मूला ऐसा कि अब टाइल न टूटेगा न छूटेगा। Major revelations in the SSR case. There's a national demand for justice for SSR. SSR case fresh claims lead to big questions. Arnab debates at 9 p.m. Big debate on what happened to Tanisha Sharma. Tanisha Sharma death case becomes the focus. Can any angle be ruled out before a full probe? Arnab debates at 10 p.m. Diktats there coming in from the Taliban that has drawn criticism from across several countries. More than 30 people have been confirmed dead so far in the US. Joint exercises that are being carried out by the forces of Kazakhstan and Indian Army as well. Vadra Congress equates Rahul to Lord Ram. Rahul Gandhi compared to Lord Ram by Congress. Outrage over Lord Ram comparison by Congress. Arnab debates at 10:30 p.m. Mixer grinder has come to this DTDC career office at KR in Hassan, and then it was delivered to a person. This person has returned the mixer bag stating that this has not come from the right address. The victim Shashi has switched on the mixer, at which point of time it has exploded. Veteran Congress leader Salman Khurshid, in which he has likened Prabhu Ram with Rahul Gandhi. Pakistan boat with 10 crew members carrying arms, ammunition and 40 kgs of narcotics worth 300 crore rupees has been intercepted off the Gujarat coast jointly by the Coast Guards. Well, good evening, friends. This 7 p.m. We bring to you the biggest story of the day in this edition of Biggest Story Tonight, and that's going to be an exclusive interview of the mortuary man, the man who was present when the post-mortem of Sushant Rajput was happening, and the man who claims that there were instructions coming in from somewhere to the administration of Cooper Hospital that do not carry out filming. Who was giving those instructions? Why someone was interested that Sushant Rajput's post-mortem should not be filmed? These are important aspects that have come out in the last 48 hours, and the man himself has spoken exclusively to Republic's Alisha. Let's listen in. केस पर एक नया खुलासा जहां पर हम देख रहे हैं। इम्पोर्टेंटली हमारे साथ वो शख्स है जो सुशांत सिंह के पोस्टमार्टम के दौरान खुद मौजूद थे। हमारे साथ रूप कुमार शाह है, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे, क्योंकि सुशांत सिंह की डेथ 14 जून 2020 में हुई थी। उस दौरान बॉडी को हॉस्पिटल में लाया गया था। आपका उस समय क्या रोल था? कितने बजे बॉडी आई थी और पोस्टमार्टम कब किया गया था? और एक बारीकी जानकारी अगर इसके ऊपर आप दें। जी, मैं उस टाइम पे देखो काम चालू होने से पहले 4-5 बॉडी आए थे, तो हम काम चालू। कौन सी तारीख की बात है? ये 14 की है। तो काम चालू करने के बाद चालू हो गया, काम हो गया। फिर हमने सुना कि भाई कोई वीआईपी एक्टर की बॉडी आ रही है। वीआईपी एक्टर बोलेगा तो मैं भी थोड़ा ट्रेस में आ गया। भाई एक्टर लोग बहुत ही सुसाइड करने लगे आजकल, ये बहुत ये हो गया। और जब 4-5 बॉडी मेरा काम होने के बाद उनका जब आया ये बॉडी आया, मैं लिया, वो लोग लेने वाले दूसरे लोग रहते।
तो लेने के बाद मैं उनका जब आया नंबर तो मैं हमारा काम ये 5-6 होने तक 7 साढ़े 7 यानी सुबह का हमारा खाना हम उस टाइम शाम को खाए। तो खाने के बाद अभी उनका नंबर आया, बोले एक करने के बाद उनका नंबर लेने गए, पेपर वर्किंग चालू है, वो ले आया जब भी वो 11 साढ़े 11 12 का टाइम था। तो लेने के बाद बॉडी जब टेबल पे आती है तो हमारा मतलब पहला काम रहता है कि बॉडी किस वजह से क्या हो गया और कौन सी तरफ से अपन को काम करना है, क्योंकि पॉइजन रहेगा तो अलग रहता है, सुसाइड रहेगा तो अलग रहता है, मर्डर केस रहेगा तो अलग तरह से करना पड़ता है, अगर स्टेपिंग का बॉडी रहेगा तो वो अलग ढंग से करना पड़ता है, अगर जहरीला बॉडी होएगा तो वो अलग ढंग से करना पड़ता है। तो अलग अलग ढंग से हमें थोड़ा देखने के बाद सुसाइड है और मैं देखा भाई तो मैं साहब से मैं थोड़ा सा डिस्कस करने गया तो वो अपने मूड में नहीं थे, वो अपने यानी जो आए थे वो डॉक्टर लोग जो हमारे साथ काम करने वाले देखने वाले, पोस्टमार्टम हम करते लेकिन वो देखते और रिपोर्ट करके सर्टिफिकेट वगैरह बनाते। तो मैं देखने के बाद पहला हैंगिंग का देखा तो हैंगिंग का कुछ दिख रहा नहीं था, वो सब मैं बोला भाई सर ये हैंगिंग का दिख रहा नहीं, कुछ अलग ही दिख रहा है मेरे को, मैं डायरेक्ट बात किया। तो करने के बाद वो मेरे को इग्नोर किए ज़रा, मेरे को थोड़ा सा गलत लगा। मैं पूरा ऑफिस बॉडी चेक करने के बाद मेरे को ये सब डिटेल्स मालूम पड़े, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बोला सर आप अभी वीडियोग्राफर नहीं आया, तुम्हारा काम देखो। ठीक है, मैं बोला काम देखता हूँ। फिर फोटोग्राफर आया, चालू काम करो चालू करो। तो मैं देखा सर ये हैंगिंग का दिख रहा है, आप मर्डर हो रहा है, आपको थोड़ा वीडियोग्राफी रहते तो अच्छा क्लियरिटी आती रहती। तो बोले तुम्हारा काम देखो, मैं मेरा काम देख रहा हूँ। ठीक है, काम चालू हो गया, पोस्टमार्टम चालू हो गया। वी कट मतलब सीधा हम जब हैंगिंग का बॉडी आ जाता है तो सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट लेते हैं। तो डॉक्टर का ऑर्डर ऐसा रहता है कि हैंगिंग का रहेगा तो वी कट लेने का, ऐसा वी कट ऐसा ऐसा लेके ऐसा वी कट लेने के बाद सब ऑर्गन सब निकाले हो गया। तो फोटोग्राफर ये तो उसका जो ऑर्गन भी उसका हो गया। तो डॉक्टर बोले इसका विसरा एसपी और ब्लड रखने का है और वर्जिन रखने का। ठीक है, हमने सब रख दिया, सब हो गया। अभी बॉडी सीने का वक्त आ गया। मैं बोला अभी तक वीडियो नहीं आया उनमें, मैं बोला अभी उनका ये है, अपन को क्या करने का, अपन को अपना काम करने का। बॉडी सी क्या हो गया, वो जो विसरा सब रहता है वो सब पैक करके उसको सील लगा के लेबल लगा के हमने अभी बॉडी जाने वाले, हम सोच रहे थे अभी लेके जाएंगे। अभी इतना वक्त करने का बोलेगा तो मैं भी सोच गया भाई लेके जाने वाला होगा कि इतने इमरजेंसी में हो रहा है, क्योंकि रात में थोड़ा सा ऐसा डिस्कस करने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो होता भी नहीं ऐसा अगर इमरजेंसी। और वीआईपी बॉडी का तो थोड़ा बहुत बड़ा इसमें से होता है। हो गया, सब हो गया। फिर बॉडी सुबह जाने वाली है, फिर हमने ऐसा मतलब ये करके रैप करके मॉर्ग में रख दिया। पहली बार जब आपने बॉडी देखी, आप जैसे बता रहे कितने सालों का तजुर्बा है आपका इस पोस्टमार्टम के लिए, पहली बार जब आपने बॉडी देखी और आप बता रहे कि ये सुसाइड नहीं दिखाई दे रहा है, किस हालात में वो बॉडी आई थी, अगर इस बारीकी पर अगर आप बता पाए। जी हाँ, तो पहली बात मैं अभी पूरा ध्यान से नहीं, मेरे को अभी याद आ रहा है, राइट या आँख या लेफ्ट आँख है वो मैं अनुमान है, इतना जोर से यानी पंच मारा हुआ था कि पूरा आँख काला होके लाल डेंजर के मापित हो गया। अगर सच्ची फोटोग्राफी अगर उधर से अच्छा हो गया होगा तो डिटेल में आ जाएगी। दूसरी बात, मैं जो अभी इंजुरी कैसा रहता है, मुक्का मार, अभी अपन चलते चलते कभी किधर गए गिर गए, अगर बॉडी हेल्दी है कुछ अच्छा है किधर अच्छे से हो गया तो क्रैक हो जाता है, वो ऊपर से नहीं दिखता है। लेकिन जब क्रैक हो गया आदमी ऐसा मालूम नहीं पड़ता है, जब चलने फिरने लगता है तो उसको मालूम पड़ता है। वैसा हमारे मतलब अभी 5 सेक्शन में मैं ये काम कर चुका हूँ। हमारा हेड ऑफिस जे है, जे राजावाड़ी, कुपर, सिद्धार्थ और भगवती। अभी तक 50-60 हज़ार के ऊपर मैंने बॉडी ऐसा देखे हुए किए हुए। उसके अंदर से मेरे को थोड़ा वो हिसाब से मैं साहब से बात करने गया तो साहब बोला तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ बस। कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि इन चीजों पे काम नहीं करना है या फिर इस पर? देखो ये ऐसा बात है ना, जब इतना इग्नोर हो गया तो मैं भी थोड़ा ये हो गया ना कि मैं भी सुशांत सिंह का फैन हूँ, तो एक उनका जैसा ख्वाब था भाई चांद के ऊपर अपन घर लेंगे, मेरा भी कुछ ख्वाब होएगा ना भाई, मैं भी चांद के ऊपर लेकर काम घर लूँगा। तो हिसाब से मेरा भी हम भी फोर्थ क्लास होंगे के बाद हमारे भी कुछ है, हमारे भी कुछ ये रहता है। तो साहब बोले ठीक है। फिर हमने देखा था तो वो जो गले का जो अपना हैंग का रहता है वो एक रैक में ऐसा रैंक में आ जाता है, रैंक में पूरा एक रैंक में। दूसरा बार
मर्डर करने गया तो अलग अलग स्टेप में ऐसा दबाने का, क्योंकि छटपट रहा है आदमी, कैसा भी रहने दो, कुछ भी अगर वो सेंसिटिव में रहेगा तो छटपटा रही, तो इसमें ऐसा रैंक में आ जाते हैं, ऐसे गले में वो अलग अलग स्टेप में अलग अलग इसमें आ जाते हैं। ये पहली बात है। और दूसरी बात, ऐसा इतना मैं देखा था कि उसको खड़ा रहने, मतलब पैर भी, हाथ पैर ऐसा मार लगने से खड़ा नहीं रह सकता। दूसरी बात, आंख पे इतना जोर से फाइट मारा हुआ, कौन मार सकता है? अगर इतना डैमेज हुआ आदमी, अगर खुद को ऐसा हैंग करने गया तो ऐसा अलग अलग इसमें आ ही नहीं सकता है। क्या कोई और इंजरीज थी या फिर कुछ और चीजें जो आपने देखकर कहा कि नहीं और भी ये सुसाइड का केस नहीं हो सकता? कोई ऐसी इंजरीज देखी थी बॉडी पे? जी, अंदर खोलने के बाद जो ऑर्गन्स रहे थे, वो ऑर्गन्स मार लगने के बाद, अभी देखो अपन गिर गए तो मुक्का मार जैसा लगता है, वैसा अंदर इंजरीज थे। वो साहब को मालूम रहता है भाई ये उनका कुछ तो भी प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा करके उन्होंने इग्नोर किया। और कुछ फ्रैक्चर वाली भी बात सामने, फ्रैक्चर में बोला, वापिस रिपीट कर रहा हूँ, अगर मार, अभी देखिए, अभी ये सादा पैंट में और अपने जीन्स पैंट में बहुत फर्क है। अभी जीन्स पैंट बोलेगा तो जरा जाड़ा आ जाता है, अगर लकड़ी से उसके ऊपर मारेगा तो थोड़ा मार लगता है, लेकिन लगता है। अगर सादे पैंट में ऊपर मारने गया तो कैसा लगेगा? जोर से लगेगा से बहुत जोर से उसका डेप आएगा। तो ऐसी बात है कि उस वक्त जिसके ऊपर वो, जब उनका ऊपर मतलब ऐसा टॉर्चर या मारदोड़ या ऐसा कुछ हो रहा होगा, उस टाइम में उनका कुछ तो बॉडी के ऊपर वैसा कपड़े होंगे, इसकी वजह से वो मार का जो ये डैमेज होता है पार्ट, वो उतना नहीं दिख रहा था। यानी कि हड्डी क्रैक बोलेगा तो ऐसा टूटने के बाद ऐसा ऊपर आ जाते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद ऐसा हड्डी बिड्डी दिखता है, ऐसा नहीं। जब अपन गिरने के बाद हड्डी अंदर क्रैक हो गई वापस नहीं मारते, सिर्फ एक्सरे में वो दिखती है। इसका मेरा मतलब बोलने का आप समझ रहे होंगे तो आपको मालूम पड़ा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इस वजह से कोई ऐसा खुद को इतना इसके अंदर हैंग करके लेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर हैंग करेगा तो वो लाइन क्लियर आ जाएंगी। आप खुद इतने सीनियर हो और आप बता रहे कि आप लगातार पूछ रहे थे वीडियोग्राफी को लेकर, हाँ, और फोटोग्राफी को लेकर, हाँ। सो क्या वो पोस्टमार्टम जो कि काम इंसान की जाती, क्या ये उस तरीके से नहीं की गई? वही मेरे को दुख है, क्योंकि देखो अगर इसको लेकर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे किसी के सीनियर्स की ओर से? नहीं, मैं हमको इतना ही था ऑर्डर रहता है भाई, जो इंचार्ज रहते उनका ऑर्डर फॉलो करने का। कितने लोग मौजूद थे उस पोस्टमार्टम उस टाइम में? 2 सर्वेंट, यानी जो उठा के रखने का, देने का, काम करने का, और मैं खुद कटर हूँ, यानी जो कटिंग कर दी बॉडी, वो कटर हूँ। तो जब ऑर्डर रहता है डॉक्टर भाई बॉडी ले लो, तो हम आके उनको बोलते, तो मॉर्ग से वो बॉडी निकाल के टेबल के ऊपर लाने का रहता है। वो 2 आदमी रहते हैं। मैं उस टाइम में 2 यानी 5 डॉक्टर लोग थे उस टाइम में, क्योंकि कोरोना ये चल रहा था, तो उस टाइम में किट डालना बहुत ये जरूरी था, तो सब लोग किट डाल के आए थे। और सवाल अब ये भी उठ रहा है कि इतने सालों बाद आप क्यों आए? क्योंकि लोग वही पूछ रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस की ओर से की जा रही थी, उसके बाद फिर सीबीआई की ओर से की जा रही थी, लेकिन उस समय जाके काफी इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो आप दे रहे हो। क्या उस समय आपने किसी से बातचीत की थी, कोई पुलिस को बताया था, या फिर सीबीआई ने कोई आपका बयान दर्ज किया? इसके बारे में कुछ भी बात मेरे तरफ से हो गई नहीं, किसको दिया नहीं, कुछ लिया नहीं। हाँ, एक बार जब काम के ऊपर आया था, कोई आया था, मैं खाना खा रहा था। एक तो मैं थक गया था, शाम का वक्त, सुबह का भी खाना मैं रात को कुछ 9-10 बजे खा रहा था। जब वो किधर से आया क्या मालूम, उसका वीडियो मैंने देखा होगा मेरा आपका वीडियो कोई, कि मैं खाना खाते वक्त कोई बात किया है। उस टाइम में मैं बहुत भड़ के बात किया, भाई मैं खाना खा रहा हूँ, भाई उतना तो टाइम दे मेरे को दो। तो घबरा के निकल के गया बाहर। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आप 2.5 साल बाद अब ये सब खुलासा कर रहे हैं। वापिस वो सवाल दे रहे हो आप। तो अभी मैं इतना बोलता हूँ कि बहुत क्राउड है, बहुत उधर मारामारी हो रही है। आप जाके उसके अंदर छुड़ा पाएंगे? आप जाके उसके अंदर छुड़ा पाएंगे? वो गर्दी में उसको जो कुछ मार रहा है, कर रहा है, या उसका मर्डर हो रहा है, आप कुछ कर पाएंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, उसका जवाब दो मेरे को पहला। वो क्लाइमेट कैसा था
और अभी का क्लाइमेट कैसा है, ये आप खुद जरा सोच के बताओ, क्या हो रहा है आपको बताओ जरा आप। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो उस समय थी वो भी जिम्मेदार थी। मैं ऐसा नाम लेके नहीं बोल सकता हूँ ना। अगर उन्होंने उतना इंटरेस्ट लेते थे, भाई पब्लिक इतना बोल रही है, पब्लिक इतना बोल रही है, उनके घर वाले भी बोल रहे हैं भाई इंसाफ चाहिए। अभी घर वालों को मालूम है, देखा है, पूरा क्लियर देखना मांगता है, उनकी बॉडी कैसा है क्या है। उन्होंने भी 1-2-4 फोटो लेने मांगते थे, लेके रखने मांगते हैं। अगर बॉडी को अगर किसने इतने जोर से पंच मारेगा जो आंख को इतना पूरा काला काला डैमेज होने तक, तो वो कैसा हो सकता है। कुछ मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आया। उसके मैं अभी इतना याद से नहीं, फोटो देखने के बाद बराबर मेरा राइट या लेफ्ट ऐसा कुछ आंख है उसका। फोटोज कभी बाहर आए कि वो सिर्फ अस्पताल के वो देखो, वो फोटो जो रहते, एक तो सीनियर ऑफिसर यानी वो जो रहते उनके पास रहता है, और एक पुलिस स्टेशन वालों के पास रहता है। तो ये फोटोज कभी बाहर आए नहीं और फिर किसी तक पहुंचे नहीं पहुंचे। तो फिर आप अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं पे आप सेफ महसूस करते हो। जी हाँ, मैं इतना ही सोच रहा हूँ, अगर मेरा भी वक्त, अगर भगवान बोलते ना देव तारी तेला कोण मारी, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मराठी में समझता रहेगा तो आपको समझ लो, देव तारी तेला कोण मारी। अभी इस वक्त मैं इस पोजीशन में हूँ, अगर भगवान बोलेगा भाई तू ऊपर आ जा, मैं ऊपर आ सकता हूँ, वो कौन से तरीके से भी बुलाए। अगर मेरे को कुछ करने का है तो सच्चा करके करो, सच्चा करके करो। अभी उस वक्त का अलग बात था, अगर उसमें करता था वो बात को मेरे को ऐसा, मतलब अभी जैसा इग्नोर। अलग क्या बात था, क्या अलग चीज लगी आपको? क्या आपको उस समय ये सारी सच्चाई बाहर बताना सही नहीं लगा? क्योंकि सच्चाई बताता तो मेरे को भी दबा के छोड़ देते थे। कैसे कोई थ्रेट्स आपको आए थे? अभी इतने उसके पीछे वापिस कितना लेन से कोई सुसाइड किया, किसका हार्ट अटैक आ गया, कोई ऐसा मरा, कोई वैसा मरा। आपको अभी आपको मैं बताने की जरूरत नहीं है। वो आज भी एक हीरोइन ने सुसाइड कर ली, क्यों कर ली? वो सुसाइड ही है, वो कराने को लग गया। आपको बता सकते हैं आप इधर है मैं इधर हूँ। आपके तजुर्बे से, ये आखिरी सवाल है, आपके तजुर्बे के हिसाब से आपने जब वो बॉडी देखी तो उस समय आपको क्या लगा, क्या ये सुसाइड है? क्योंकि आपके तक जब बॉडी आई थी तब यही बताया जा रहा था कि सुशांत सिंह ने सुसाइड। जी हाँ, मैं इतना ही बोल सकता हूँ, 101 तक का वो मर्डर है, और मर्डर आज नहीं कल अगर भगवान है तो ओपन करके दिखाएगा। अभी उसके अंदर से मेरे को बात कर रहे हैं भाई, मैं इतना बोलता हूँ कि भाई मेरे को एक इंसाफ चाहिए। अगर मैं मर जाऊंगा मेरे घर वाले भी बोलेंगे भाई मेरे को कोई तो भी इंसाफ दो। अगर इसके अंदर मेरी जान भी चली जाए मेरे को उसका परवाह नहीं, बस इतना ही जानता हूँ कि उसको जगह अगर न्याय मिलेगा यानी इंसाफ, तो मेरे को ज़रा शांति मिल जाए। क्योंकि मैं बहुत बड़ा उसका फैन था, क्योंकि उसका लाइन भी मैंने थोड़ा सा देखा था, उसकी वजह से वो जो स्टेप में और जो स्ट्रगल करके उन्होंने किया था वो मैं भी कर चुका हूँ। और क्या इसी इंसाफ के लिए अगर सीबीआई आपको किसी दिन बुलाती है अपना बयान दर्ज करने के लिए, तो क्या सारी इन चीजें सबूतों के साथ आप उनके पास जाएंगे? मैं सबूत मेरे पास नहीं, वो पुलिस लोगों के पास है। हाँ, फोटोग्राफी और वो जो वीडियो मतलब क्या कैमरा का जो रील है वो रील ओरिजिनल और फोटो ओरिजिनल पहुँचे। अगर उसके अंदर मेरे को जो कुछ है मैंने बोला वैसा दिखेगा फोटो में तो मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ। अगर ये ऐसा मतलब वो एक रहता है एक तरीका पोस्टमार्टम का जो पैथोलॉजी बोलते हैं उसको, वो एक अलग ढंग का पोस्टमार्टम रहता है, वो डिक्शनरीज का वैसा बॉडी करके देखना पड़ता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट मुकुट के साथ अली शनार, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। All right, that was Roop Kumar Shah, the mortuary attendant who was present when Sushant Singh Rajput's post-mortem was carried out. He was speaking exclusively to Alisha Nair in Mumbai, and the points that he made, very important ones. 101% he said. Roop Kumar Shah, the mortuary attendant, saying 101% based on his experience of thousands of postmortems that Sushant Singh Rajput was murdered. Again, we have to reiterate, it's Roop Kumar Shah, the mortuary attendant, saying that it was a murder and he's 101% sure. And then he said that the injury marks did not correlate with what happens when someone typically commits a suicide. There was a protrusion, there was a bone fracture, those things do not happen, and there was darkness around the eyes, in both the eyes. That does not happen when only a suicide is committed. It's likely that Sushant was
there was a physical attack on Sushant. In fact, Alisha Nair, who interviewed Roop Kumar Shah, is joining us live from Mumbai. Alisha, over to you. What's your sense? You were, interviewing him. You met with Roop Kumar Shah and I believe understood directly from him what he really means by whatever he has been saying over the last 48 hours. How confident do you think Roop Kumar Shah was that his thesis might prove right, that Sushant Singh Rajput was actually murdered? Well, Abhishek, while talking about the confident over the Roop Kumar Shah, because he was the person and he was giving a very minute details over what has really happened, because he clearly mentioned that it was 14th of June 2020 when Sushant Singh Rajput was found dead, and later he was taken to the Cooper Hospital for the post-mortem. At that point of time, there were many of the post-mortem that has already been conducted, and later the staff were given information that there will be some VVIP body that is going to be, reached at the hospital, and there has to be the post-mortem that has to be done. And the time the body reached to the post-mortem room, when they were about, the 5 doctors were present, also 2 servants, and as well as Roop Kumar Shah was also present in the same room, and they were been doing a post-mortem. And looking at the body itself, he clearly mentions that it was not a suicide but a murder, because the way the scathing information that has been provided, and a very minute information that has been provided while he saw the body, he itself says that it was a V-cut mark on his neck, which does not come when they conduct a postmortem or when it's a body of a suicide. So he was very much confident enough that this is not a suicide but a murder, because it was not only the 1 mark but it was 3 mark. Moreover, the question that has also been rises over the videography. When there is a postmortem that has to be conducted, there is a videography and the photography that has to be done, and of course the videography so that the doctors can even read about it and make a report about it. Alisha. But when it comes to the Sushant Singh Rajput, there was no videography that has been done, and when he pointed out to his senior, he was asked to mind his own business. Yes. Alisha. No, in fact, I was listening with a lot of attention to what he was telling you, Alisha, and what struck me was his narration, that there was no videography done of the post-mortem based on some instructions that came to the Cooper administration, number 1. Number 2, he also said, if I got it right in his mixed Hindi-Marathi, that there was this hush-hush and rush-rush feel to the entire exercise, where somebody wanted this to be done quickly and be done with it, and seems instructions were coming from somewhere. You think Roop Kumar Shah has more information that he could share at a later stage, or in your informal interaction with him before the interview began, did he give an indication of whether the Cooper administration was only kowtowing to some instructions coming in from outside the hospital? Well, that is what been informed by Roop Kumar Shah, because he's been saying that multiple times he went to the doctors and also informed why there is no videography team in the mortuary, and specifically when they've been conducting the postmortem. And for a very common body, if someone is dead, so it is a procedure. It's a part of a procedure that there should be a videography, but they were not done, and was continuously been asked to mind his business. Moreover, he is also ready if Central Bureau of Investigation, who has been investigating into the case, if they come up and they turn up and ask him to record his statement, he initially mentioned that he does not have the proof, because what he saw is what he has narrated. He's clearly mentioning, he's just narrating the things that he has saw in his own eyes. He was multiple times asked to keep quiet and mind his own business when he interrupted, just because he's been a very senior, and specifically he's been working in the postmortem department since 28 years, which is why he was very much surprised when there was no videography team, and he was continuously asking to his seniors. And this is what also he's been mentioning in our interview as well, that he multiple times he has mentioned about the videography asked to his seniors, but whenever he was asked, it was a clear cut where he was asked to mind his own business. He was asked to rush for this post-mortem. Not only this, but also the doctors who were present, they were asked to rush for this post-mortem. So there could be some of the instructions that has been given, but this is something a part of investigation, where now the CBI will definitely look into it, because he is also ready to record his testimony before the CBI. He is just waiting
the agency to get in touch with him, so that it's a very important testimony, and the information, the scathing information that he has come up with, specifically a minute details when he itself was present in the same postmortem when the postmortem was conducted, where there were two servants who were putting up, taking up the body, who was helping hand for the doctors, as well as he was also present in the same postmortem, because he also mentioned that he's a cutter. He cuts the body into the parts, whatever the instruction that has been given by the doctor. So of course, we can clearly mention that the testimony that has been given by a mortuary attendant, that is Rup Kumar Shah, is something very important, and we'll see what the CBI will also look into it or not. Yes. Absolutely. CBI perhaps would have no option but to look at it. These are important revelations being made by the mortuary attendant Rup Kumar Shah. Alisha, hold on to your thoughts as we come back to discuss the interview a little more in detail. But remember, viewers, the kind of emotions death of Sushant Singh Rajput had generated at that time. And from grassroots, from people on the ground to the celebrities, particularly those coming in from Bihar. And that's why we have had interview with Shekhar Suman, who earlier spoke to our Bihar Bureau Chief and Senior Editor Prakash Singh in Patna. Let's listen into what those sentiments are after this interview. Sushant Singh Rajput's mysterious death 2.5 years back has come to haunt yet again. Shekhar Suman, who was at the forefront of the movement that led the campaign for justice for SSR, is joined with us on Republic TV yet again after Rup Kumar Shah, an attendant of the Cooper Hospital, has made a sensational revelation that when the body of SSR arrived on 14 June 2020 in the Cooper Hospital for postmortem, it appeared that it was not a case of suicide, but it was a case of murder. Thank you, Shekhar Sumanji, for joining with us on Republic TV. Now, Rup Kumar Shah of the Cooper Hospital has made a sensational revelation. Will this revelation or the statement made by Rup Kumar Shah give a further lead for investigating the SSR death probe in a different direction now? Hopefully, yes. I think this has happened much too late, but it, in view of the fact that he has given a very loaded and very potent and very sensational statement, I think that he has once again lent credence to the fact that SSR's case was not a case of suicide but murder. This is something that all of us have been voicing for so long, millions of people across the world. It has to be looked from different angles. First and foremost, I think Rup Kumar Shah's statement has come after 2.5 years. So what exactly stopped him or prevented him from saying all this that he should have said then, and it would have helped the matter in a big way, and probably things would have moved towards a conclusion. There would have been a closure by now. Was it a threat, or was it his insecurity of losing the job, fear of the seniors, or fear of his life? What was it? Only Rup Kumar knows. But I think it was probably the guilt that he was carrying over the years, something that he knew, something intuitively and instinctively that he surmised. People may say it's a conjecture and doctors are brushing it off, but it cannot be just set aside or dismissed as balderdash, as blather or bunkum, because he's been there doing his job for the last 28 years. He has done postmortem to about 60,000 bodies, and then he's well versed with everything, and he says that he could distinctly sort of see and make out that there were ligation marks, there were injury marks on his body, and it was a clear-cut case of murder. But then the powers to be, the people around, the forensic experts, the doctors, that's what he says, did not listen to him, and the case was shut. So now, in view of the fact that he has made such an explosive and sensational statement, I think it's a big enough lead, and then people in the concerned authority should act upon it immediately and take this forward.
Well, questions were raised then also, Shekhar Sumanji, when the body was pulled out from the room, that there were no video evidence from the building where Sushant Singh Rajput lived. And also, as a matter of fact, as Roop Kumar Shah claims that no videography was done in the post-mortem room as well. So there is no evidence to it now. Even if now Roop Kumar Shah makes a claim, will that stand out as far as the investigation is concerned, or will that have legal tenability in the court of law? Whether it would have legal tenability in the court of law is for the law to decide. As I said, that what he has said is what he felt. You know, so it can be passed off as conjecture at best or surmise, something that was his own conclusion. That is not a concrete evidence. It's something that, you know, the other side is going to argue. But looking at the fact that, you know, he has come up with a statement suddenly after 2.5 years, what... Republic speaks to mortuary attendant where a scathing information that has been come out over the Sushant Singh Rajput death. Moreover, it will continue over the revelation, and we'll see what the Central Bureau of Investigation will actually account on this. Continuously rolling on this big story, and also debate at 9 p.m. where more of the revelations are from the mortuary attendant, who has actually made a very much revelations as he was present at the time of a post-mortem. We'll be back after a short break. Stay tuned. Powered by at Hyundai, we are going beyond mobility. LIC, हर पल आपके साथ. Amity faculty have filed over 1,700 patents. Yet another reason why Amity has been conferred with the National Intellectual Property Award by Government of India for being the top Indian academic institution for patents and commercialization. सामने फ्यूल पंप है, वहां से ले लें। जी सर, फ्यूल तो पिछले पंप में भी मिल जाता। इंडियन ऑयल में ऐसा क्या है? कुछ है स्पेशल, खुद ही देख लेना। स्पेशल? अरे इंडियन ऑयल की तो बात ही कुछ और है। जरा देखिए, फ्यूल तो बराबर डाल रहे हैं ना। अरे यहाँ कंप्लीट ऑटोमेशन है, मतलब प्योर और पूरा दोनों ही। इन सेंट्रली मॉनिटर्ड मशीन्स की एक-एक रीडिंग का हिसाब है यहाँ पर। क्या हुआ? सर बिल। हाँ बिल। हो गया। वाह सर। क्या था ना? इंडियन ऑयल की बात ही कुछ और है। इंडियन ऑयल, पहले इंडियन, फिर ऑयल। Magnificent picture, magnificent sound, magnificent experience, Magnifique, high-performance TVs by Aiwa Japan, now in India. India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amrit Kaal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharati Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. It is important to keep your HbA1c in the target range of 6.5 to 7% to avoid complications. With Pito's Diabetes Care program, get online doctor consultation, all your prescribed medicines and a dietitian consultation. Get a free glucometer and expert advice with Pito's Diabetes Care program. Give a missed call on 740 1100. Viewers, time for exclusive right now. Republic speaks to the mortuary attendant, Roop Kumar Shah.
He is saying many important things, like he was present in the hospital at the time he saw the body. It was crystal clear that it's a murder. That's exactly what he has said. Let's play out that exclusive conversation. सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस पर एक नया खुलासा जहां पर हम देख रहे हैं। इम्पोर्टेंटली हमारे साथ वो शख्स है जो सुशांत सिंह के पोस्टमार्टम के दौरान खुद मौजूद थे। हमारे साथ रूप कुमार शाह है, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे जानेंगे, क्योंकि सुशांत सिंह की डेथ 14 जून 2020 में हुई थी। उस दौरान बॉडी को हॉस्पिटल में लाया गया था। आपका उस समय क्या रोल था? कितने बजे बॉडी आई थी और पोस्टमार्टम कब किया गया था? और एक बारीकी जानकारी अगर इसके ऊपर आप दें। जी, मैं उस टाइम पे देखो काम चालू होने से पहले 4-5 बॉडी आए थे, तो हम काम चालू, कौन सी तारीख की बात है? ये 14 की है। तो काम चालू करने के बाद चालू हो गया, काम हो गया। फिर हमने सुना कि भाई कोई वीआईपी एक्टर की बॉडी आ रही है। वीआईपी एक्टर बोलेगा तो मैं भी थोड़ा ट्रेस में आ गया। भाई एक्टर लोग बहुत ही सुसाइड करने लगे आजकल, ये बहुत ये हो गया। और जब 4-5 बॉडी मेरा काम होने के बाद उनका जब आया ये बॉडी आया, मैं लिया, वो लोग लेने वाले दूसरे लोग रहते। तो लेने के बाद मैं उनका जब आया नंबर, तो मैं हमारा काम ये 5-6 होने तक 7 साढ़े 8 यानी सुबह का हमारा खाना हम उस टाइम शाम को खाए। तो खाने के बाद अभी उनका नंबर आया, बोले एक करने के बाद उनका नंबर लेने गए। पेपर वर्किंग चालू है, वो ले आया। जब वो 11 साढ़े 11 12 का टाइम था। तो लेने के बाद बॉडी जब टेबल पे आती है तो हमारा मतलब पहला काम रहता है कि बॉडी किस वजह से क्या हो गया और कौन सी तरफ से अपन को काम करना है। क्योंकि अगर पॉइजन रहेगा तो अलग रहता है, सुसाइड रहेगा तो अलग रहता है, मर्डर केस रहेगा तो अलग तरह से करना पड़ता है, अगर स्टैपिंग का बॉडी रहेगा तो वो अलग ढंग से करना पड़ता है, अगर जहरीला बॉडी होएगा तो वो अलग ढंग से करना पड़ता है। तो अलग अलग ढंग से हमें थोड़ा देखने के बाद सुसाइड है। और मैं देखा भाई तो मैं साहब से मैं थोड़ा सा डिस्कस करने गया, तो वो अपने मूड में नहीं थे। वो अपने यानी जो आए थे वो डॉक्टर लोग जो हमारे साथ काम करने वाले, देखने वाले, पोस्टमार्टम हम करते लेकिन वो देखते और रिपोर्ट करके सर्टिफिकेट वगैरह बनाते। तो मैं देखने के बाद पहला हैंगिंग का देखा, तो हैंगिंग का कुछ दिख रहा नहीं था। वो सब मैं बोला भाई सर ये हैंगिंग का दिख रहा नहीं, कुछ अलग ही दिख रहा है मेरे को। मैं डायरेक्ट बात किया, तो करने के बाद वो मेरे को इग्नोर किए ज़रा, मेरे को थोड़ा सा गलत लगा। मैं पूरा ऑफिस बॉडी चेक करने के बाद मेरे को ये सब डिटेल्स मालूम पड़े। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बोला सर आप अभी वीडियोग्राफर नहीं आया, तुम्हारा काम देखो। ठीक है, मैं बोला काम देखता हूँ। फिर फोटोग्राफर आया, काम चालू करो। तो मैं देखा सर ये हैंगिंग का दिख रहा है, आपके मर्डर हो रहा है, आपको थोड़ा वीडियोग्राफी रहते तो अच्छा क्लियरिटी आती रहती। तो बोले तुम्हारा काम देखो, मैं मेरा काम देख रहा हूँ। ठीक है, काम चालू हो गया, पोस्टमार्टम चालू हो गया। वी कट मतलब सीधा हम जब हैंगिंग का बॉडी आ जाता है तो सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट लेते हैं। तो डॉक्टर का ऑर्डर ऐसा रहता है कि हैंगिंग का रहेगा तो वी कट लेने का, ऐसा वी कट ऐसा ऐसा लेके ऐसा वी कट लेने के बाद सब ऑर्गन सब निकाले हो गया। तो फोटोग्राफर ये तो उसका जो ऑर्गन भी उसका हो गया। तो डॉक्टर बोले इसका विसरा एसपी और ब्लड रखने का है और वर्जिन रखने का। ठीक है, हमने सब रख दिया, सब हो गया। अभी बॉडी सीने का वक्त आ गया। मैं बोला अभी तक वीडियो नहीं है उनमें। मैं बोला अभी उनका ये है, अपन को क्या करने का, अपन को अपना काम करने का। बॉडी सी क्या हो गया, वो जो विसरा सब रहता है वो सब पैक करके उसको सील लगा के लेबल लगा के हमने अभी बॉडी जाने वाले। हम सोच रहे थे अभी लेके जाएंगे, अभी इतना वक्त करने का बोलेगा तो मैं भी सोच गया भाई लेके जाने वाला होगा कि इतने इमरजेंसी में हो रहा है। क्योंकि रात में थोड़ा सा ऐसा डिस्कस करने में थोड़ा सा तकलीफ होता भी नहीं ऐसा अगर इमरजेंसी। और वीआईपी बॉडी का तो थोड़ा बहुत बड़ा इसमें से होता है। हो गया, सब हो गया। फिर बॉडी सुबह जाने वाली है। फिर हमने ऐसा मतलब ये करके रैप करके मॉर्ग में रख दी। पहली बार जब आपने बॉडी देखी, आप जैसे बता रहे कितने सालों का तजुर्बा है आपका इस पोस्टमार्टम के लिए, पहली बार जब आपने बॉडी देखी और आप बता रहे कि ये सुसाइड नहीं दिखाई दे रहा है, किस हालात में वो बॉडी आई थी, अगर इस बारीकी पर अगर आप बता पाए। जी हाँ, तो पहली बात मैं अभी पूरा ध्यान से नहीं, मेरे को अभी याद आ रहा है, राइट या आँख या लेफ्ट आँख है वो मैं अनुमान है, इतना जोर से यानी पंच मारा हुआ था कि पूरा आँख काला होके लाल डेंजर के मापित हो गया। अगर सच्ची फोटोग्राफी अगर उधर से अच्छा हो गया होगा तो डिटेल में आ जाएगी।
दूसरी बात, मैं जो अभी इंजरी कैसा रहता है, मुक्का मार, अभी अपन चलते चलते कभी किधर गए, गिर गए, अगर बॉडी हेल्दी है, कुछ अच्छा है, किधर अच्छे से हो गए तो क्रैक हो जाता है, वो ऊपर से नहीं दिखता है, लेकिन जब क्रैक हो गया आदमी, ऐसा मालूम नहीं पड़ता है, जब चलने फिरने लगता है तो उसको मालूम पड़ता है। वैसा हमारे मतलब अभी 5 सेक्शन में मैं काम कर चुका हूँ। हमारा हेड ऑफिस जे है, जे राजावाड़ी, कुपर, सिद्धार्थ और भगवती। अभी तक 50-60 हज़ार के ऊपर मैंने बॉडी ऐसा देखे हुए किए हुए। उसके अंदर से मेरे को थोड़ा वो हिसाब से मैं साहब से बात करने गया, तो साहब बोला तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, बस। कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि इन चीजों पे काम नहीं करना है, या फिर इस पर? देखो, ये ऐसा बात है ना, जब इतना इग्नोर हो गया तो मैं भी थोड़ा ये हो गया ना, कि मैं भी सुशांत सिंह का फैन हूँ, तो एक उनका जैसा ख्वाब था भाई चांद के ऊपर अपन घर लेंगे, मेरा भी कुछ ख्वाब होएगा ना भाई, मैं भी चांद के ऊपर लेकर काम घर लूँगा, तो हिसाब से मेरा भी, अब हम भी फोर्थ क्लास होंगे नहीं, भाई हमारे भी कुछ है, हमारे भी कुछ ये रहता है। तो साहब बोले ठीक है। फिर हमने देखा था तो वो जो गले का जो अपना हैंग का रहता है, वो एक रैक में ऐसा रैंक में आ जाता है, रैंक में पूरा एक रैंक में। दूसरा बार मर्डर करने गया तो अलग अलग स्टेप में ऐसा दबाने का, क्योंकि छटपट रहा है आदमी, कैसा भी रहने दो, कुछ भी अगर वो सेंसिटिव में रहेगा तो छटपटा रही, तो इसमें ऐसा रैंक में आ जाते हैं, ऐसे गले में वो अलग अलग स्टेप में अलग अलग इसमें आ जाते हैं। ये पहली बात है। और दूसरी बात, ऐसा इतना मैं देखा था कि उसको खड़ा रहने, मतलब पैर भी, हाथ पैर ऐसा मार लगने से खड़ा नहीं रह सकता है। दूसरी बात, आंख पे इतना जोर से फाइट मारा हुआ, कौन मार सकता है? अगर इतना डैमेज हुआ आदमी, अगर खुद को ऐसा हैंग करने गया तो ऐसा अलग अलग इसमें आ ही नहीं सकता है। क्या कोई और इंजरीज थी या फिर कुछ और चीजें जो आपने देखकर कहा कि नहीं और भी ये सुसाइड का केस नहीं हो सकता, कोई ऐसी इंजरीज देखी थी बॉडी पे? जी, अंदर खोलने के बाद जो ऑर्गन्स रहते, वो ऑर्गन्स मार लगने के बाद, अभी देखो अपन गिर गए तो मुक्का मार जैसा लगता है, वैसा अंदर इंजरीज थे। वो साहब को मालूम रहता है भाई ये उनका कुछ तो भी प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा करके उन्होंने इग्नोर किया। और कुछ फ्रैक्चर वाली भी बात सामने, फ्रैक्चर मैं बोला, वापिस रिपीट कर रहा हूँ, अगर मार, अभी देखिए, अभी ये सादा पैंट में और अपने जीन्स पैंट में बहुत फर्क है। अभी जीन्स पैंट बोलेगा तो जरा जाड़ा आ जाता है, अगर लकड़ी से उसके ऊपर मारेगा तो थोड़ा मार लगता है, लेकिन लगता है। अगर सादे पैंट में ऊपर मारने गया तो कैसा लगेगा? जोर से लगेगा से बहुत जोर से उसका डे पाएगा। तो ऐसी बात है कि उस वक्त जिसके ऊपर वो, जब उनका ऊपर मतलब ऐसा टॉर्चर या मारदोड़ या ऐसा कुछ हो रहा होगा, उस टाइम में उनका कुछ तो बॉडी के ऊपर वैसा कपड़े होंगे, इसकी वजह से वो मार का जो ये डैमेज होता है पार्ट, वो उतना नहीं दिख रहा था। यानी कि हड्डी क्रैक बोलेगा तो ऐसा टूटने के बाद ऐसा ऊपर आ जाते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद ऐसा हड्डी बिड्डी दिखता है, ऐसा नहीं। जब अपन गिरने के बाद हड्डी अंदर क्रैक हो गई वापस नहीं मारते, सिर्फ एक्सरे में वो दिखती है। इसका मेरा मतलब बोलने का आप समझ रहे होंगे तो आपको मालूम पड़ा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इस वजह से कोई ऐसा खुद को इतना इसके अंदर हैंग करके लेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर हैंग करेगा तो वो लाइन क्लियर आ जाएंगी। आप खुद इतने सीनियर हो और आप बता रहे कि आप लगातार पूछ रहे थे वीडियोग्राफी को लेकर, हाँ, और फोटोग्राफी को लेकर, हाँ। सो क्या वो पोस्टमार्टम जो कि काम इंसान की जाती, क्या ये उस तरीके से नहीं की गई? वही मेरे को दुख है, क्योंकि देखो अगर इसको लेकर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे किसी के सीनियर्स की ओर से? नहीं, मैं हमको इतना ही था ऑर्डर रहता है भाई, जो इंचार्ज रहते उनका ऑर्डर फॉलो करने का। कितने लोग मौजूद थे उस पोस्टमार्टम उस टाइम में? 2 सर्वेंट, यानी जो उठा के रखने का, देने का, काम करने का, और मैं खुद कटर हूँ, यानी जो कटिंग कर दी बॉडी वो कटर हूँ। तो जब ऑर्डर रहता है डॉक्टर भाई बॉडी ले लो, तो हम आके उनको बोलते, तो मार्ग से वो बॉडी निकाल के टेबल के ऊपर लाने का रहता है। वो 2 आदमी रहते हैं। मैं उस टाइम में 2 यानी 5 डॉक्टर लोग थे उस टाइम में, क्योंकि कोरोना तो ये चल रहा था, तो उस टाइम में किट डालना बहुत ये जरूरी था, तो सब लोग किट डाल के आए थे। सवाल अब ये भी उठ रहा है कि इतने सालों बाद आप क्यों आए,
क्योंकि लोग वही पूछ रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस की ओर से की जा रही थी, उसके बाद फिर सीबीआई की ओर से की जा रही थी, लेकिन उस समय जाके काफी इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो आप दे रहे हो। क्या उस समय आपने किसी से बातचीत की थी, कोई पुलिस को बताया था या फिर सीबीआई ने कोई आपका बयान दर्ज किया? इसके बारे में कुछ भी बात मेरे तरफ से हो गई नहीं, किसको दिया नहीं, कुछ लिया नहीं। हाँ, एक बार जब काम के ऊपर आया था, कोई आया था, मैं खाना खा रहा था। एक तो मैं थक गया था शाम का वक्त, सुबह का भी खाना मैं रात को कुछ 9-10 बजे खा रहा था। जब वो किधर से आया क्या मालूम, उसका वीडियो मैंने देखा होगा मेरा आपका वीडियो कोई, कि मैं खाना खाते वक्त बात किया है। उस टाइम में मैं बहुत भड़ के बात किया, भाई मैं खाना खा रहा हूँ, भाई उतना तो टाइम मेरे को दो। तो घबरा के निकल के गया बाहर। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आप 2.5 साल बाद अब ये सब खुलासा कर रहे हैं। वापिस वो सवाल दे रहे हो आप। तो अभी मैं इतना बोलता हूँ कि बहुत क्राउड है, बहुत उधर मारामारी हो रही है। आप जाके उसके अंदर छुड़ा पाएंगे? आप जाके उसके अंदर छुड़ा पाएंगे? वो गर्दी में उसको जो कुछ मार रहा है, कर रहा है, या उसका मर्डर हो रहा है, आप कुछ कर पाएंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, उसका जवाब दो मेरे को पहला। वो क्लाइमेट कैसा था और अभी का क्लाइमेट कैसा है, ये आप खुद जरा सोच के बताओ। क्या हो रहा है आपको बताओ जरा आप। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो उस समय थी वो भी जिम्मेदार थी। मैं ऐसा नाम लेके नहीं बोल सकता हूँ ना। अगर उन्होंने उतना इंटरेस्ट लेते थे, भाई पब्लिक इतना बोल रही है, पब्लिक इतना बोल रही है, उनके घर वाले भी बोल रहे हैं भाई इंसाफ चाहिए। अभी घर वालों को मालूम है, देखा है, पूरा क्लियर देखना मांगता है, उनकी बॉडी कैसा है क्या है। उन्होंने भी 1-2-4 फोटो लेने मांगते थे, लेके रखने मांगते हैं। अगर बॉडी को अगर किसने इतने जोर से पंच मारेगा जो आँख को इतना पूरा काला काला डैमेज होने तक, तो वो कैसा हो सकता है? कुछ मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आया? उसके मैं अभी इतना ध्यान से नहीं, फोटो देखने के बाद बराबर मेरा राइट या लेफ्ट ऐसा कुछ आँख है उसका। फोटोज कभी बाहर The SSR truth from the critical eyewitness. The eyewitness version the nation is talking about. Critical eyewitness speaks out on the SSR case. Arnab debates at 9 p.m. Powered by Amity University, ranked amongst the top 3% universities globally. Citroën C3, express your style. HDFC Life, Sarutake Geo. Amity faculty have filed over 1,700 patents. Yet another reason why Amity has been conferred with the National Intellectual Property Award by Government of India for being the top Indian academic institution for patents and commercialization. क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा करके रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है।